Good morning students. I am Chauhan sir from Indo-Bharat International Public School. Now chapter number 1 for class 10th, real numbers. In previous class 9 we already discussed about the real numbers. Real number is the combination of two numbers. First is the rational and second is the irrational number. Rational and irrational both numbers are called real number. Now this time we discuss about the real number is the very important role for the real numbers for finding the LCM and HCF. In smaller class we already discussed about the long division method. It's very simple. In the smaller class we use, for example, suppose 17 divided by 6. So how can we divide this number? 17 divided by 6, 6 into 1 6 and 6 into 2 12, but 6 into 3 is 18. But 18 is the more than 17. So we take the less than number. 6 into 2 is the 12 and remainder is 17 minus 12 is the 15. This number is the always less than 17 or maybe equal to 17. So it is called quotients and it is called the remainder, and this number is let as a and this number let as a b. This whole part write in the horizontal in the statement form. For suppose we write the 17 is equal to 6 into this number 2 and plus remainder is the 15. 17 minus is the 5. 17 minus 12 is the 5. So this number is the 5. This 5 is always less than is the 17 or maybe equal to. So this whole statement write in the form of this long division method, write in the form of horizontal. This statement is called the in 10th class like as a Euclid's division lemma. Now here lemma is not any word. This lemma is the called algorithm, means method. Also it is called Euclid's division algorithm. This Euclid's division algorithm, what is say this statement? For given two positive integers a and b, there exist unique two integers q and r which are satisfying the statement a equal to bq plus r, where r is the remainder. This remainder r is the always less than b and may be greater than equal to 0. So this whole statement is called Euclid's division algorithm or Euclid's division lemma. This is the first theorem for the class 10, and this theorem used for the finding the HCF. So it is a very important role for finding the highest common factor by using this method. In previous class also we find the HCF using the some other methods, but in this class we find the HCF using this Euclid's lemma. It's the very simple. Suppose find the HCF of two any number using this method. Now how can we find the HCF by using this method? It's very simple. Suppose we take the two numbers 17 and 6 and find the HCF by using Euclid's lemma. So how can we find? First we take a as a greater number because a is the always greater than b. So we take a as the 17 and b is the 6. There are two numbers. Now first we multiply this number. हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो 17 आ जाए या फिर just less than 17. So now we take the 6 into 2 is the 12.
6 into 3 is the 18. 18 is the greater than 17. So just take the less than number. So now 6 into 2 is the 12 and plus 12 already आ चुका है. Now 17 minus 12 is the answer is the 5. So it is the Q and it is the R. It is the first statement, first step. Now second step, आपको ये जब तक करना है जब तक रिमाइंडर बिकम इज द जीरो, जब तक ये जीरो नहीं हो जाए जब तक इस स्टेटमेंट को हम कंटिन्यू करेंगे. अब करना कैसे? इजीली. नाउ अगेन वी टेक दिस नंबर एज ए 6 and equal to this remainder as a 5. This time take 6 as a A and 5 as a B. Now again we multiply then any number to maybe equal to 6 or maybe just less than 6. So now this time 5 into 1 5, 5 into 2 is the 10, but 10 is the greater than 6. So we take this the 1. 5 into 1 5, but this time remainder is 6 minus 5 is the 1. It is the second step, but remainder is not equal to 0. So continue. This method is the same. This time we take the 5 like this one A, and this remainder you take as a B and into. Now 1 into, again multiply the any number, just become is the 5 or just less than 5, but this time 1 into 5 is the 5 and remainder is become 0. इस बार remainder 0 आ गया. Now stop this step, but this is called third step. अब आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है because remainder is already become 0. Now तो what is the SCF? Last multiple, this is the called SCF. कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि सर SCF हम क्या लें, 1 या 5. 5 से तो आपने मल्टीप्लाई किया है, तो B जो नंबर है दिस इज द B, दिस नंबर इज द SCF. अगर कभी कंफ्यूजन हो तो इसका एक सबसे बड़ा तरीका बता देता हूं मैं आपको. 0 से जस्ट ऊपर वाला नंबर ये रिमाइंडर ले लीजिए. दिस रिमाइंडर इज द ऑलवेज SCF. सो SCF इज इक्वल टू 1 of 17 and 6. It is the answer. So 1 is the SCF of 17 and 6. It is clear? Now one more example is the today is only finding the SCF of two given number. आज अपन डिस्कस करेंगे only for the first theorem Euclid's lemma and find the SCF using for SCF for two numbers. Now second number there are 5 and 12. Now find the SCF of 5 and 12. So first we take the 12 as a and 5 as a B. Now 5 into, this time 5 into 1 5, 5 into 2 10, 5 into 3 15, but 15 is the more than 12. So just take the less than number 5 into 2 10 and plus this 10, 12 minus 10 is 2, so remainder is 2. But remainder is not equal to 0. Okay, no problem. Again continue the step. 5 is equal to, this is the remainder 2 and into. This time this 5 equal to 2, 2 into 2 4, because 2 into 3 is the 6, 6 is the more than 5. So 2 into 2 4 and plus 5 minus 4 is the 1. Now again we take is the 2 is equal to, this is the 1 into, and 2 into 1 2 and equal to 2, so remainder is 0. So again what is the SCF? Now SCF is 1. Again this time SCF of 12 and 5 is again SCF is 1. Highest common factor of 5 and 12 is this number.
नाउ वन मोर एग्जाम्पल, दोनों टाइम 1 आ रहा है, आप कहोगे सर ये 1 ही क्यों आ रहा है, तो चलिए अपन एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एचसीएफ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो नाउ नेक्स्ट इज वी टेक द नंबर is the 70 and 30. Suppose we take 70 and 30 and find the HCF of these two number. Now this time 70 equal to 30 into 30 into 2 60 and 60 subtract from 70 is the 10, remainder is the 10. Again 30 is equal to 10 and 10 into 3 is the 30. So plus remainder is 0. In second step, कई बार फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ सकता है, कई बार सेकंड स्टेप में, और कई बार जब तक आपको करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ओके, नाउ कंटिन्यू। नाउ दिस टाइम रिमाइंडर इज 0, सो लास्ट divisor is the 10, so it is the HCF. This time HCF is the 10. So 70 and 30, HCF of 70 and 30 is equal to 10. So it is the HCF. Now one more example. For example, 455 is equal to 42. What is the HCF of 455 and 42? Now is the first is the 42 multiplied to 10. 420 is the just less than number, subtract the plus is the 35. Now number is the 35, remainder. Again this 42 you take as it is and equal to this remainder 35, this time into 1, because 35 into 2 is the 70, 70 is the more than 42, so you take the just less than number, same, so 1 and plus 35 subtract from this number, now number is the 7. Now again 35 is equal to 7 and 7 into is the 5, because 7 into 5 is the 35, so again remainder is equal to 0. अब आपके सामने रिमाइंडर 0 आ गया, तो लास्ट डिवाइजर है 7, तो व्हाट इज द एचसीएफ? एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 इज दिस 7 is the HCF of 455 and 42. क्या सीखा हमने आज? Find the HCF of any two positive integers. First we take A as the greater number and B as the less than number, and find the Q and R according to these two number. और इस स्टेप्स को हम कंटिन्यू जब तक करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो लास्ट स्टेप में जब 0 रिमाइंडर आ जाता है तो लास्ट जो डिवाइजर है 7 वही आपका एचसीएफ होगा। इन दोनों नंबर में से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार बच्चे एचसीएफ 5 लिख देते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि आप जब इन दोनों नंबर में कंफ्यूज हो तो जब रिमाइंडर 0 हो तो 0 से जस्ट ऊपर वाला जो रिमाइंडर है उसको आप एचसीएफ ले लीजिए, तो कंफ्यूज होगा ही नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा नंबर लेना है। 7 और 7 है ये, तो आपको फाइंड करना है, तो ये आपके लिए कंफ्यूजन भी आपका दूर हो गया। तो हमने फाइंड किया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू एनी पॉजिटिव नंबर बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इट इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज, और ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है 1.1। तो आज आपने 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 वो मैंने आपको कंप्लीट किया है। एक क्वेश्चन इसमें बाकी रह जाता है जो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको आज तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ओनली फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर। इस मेथड से अपन केवल एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, नॉट एलसीएम, ये चीज़ ध्यान रखें। और थर्ड, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, केवल 2 नंबर के लिए ही इस थ्योरम को हम यूज़ करते हैं, 3 नंबर्स के लिए नहीं। अगर 3 नंबर्स के लिए हम करते हैं तो 3 नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम 2 नंबर के लिए फाइंड करेंगे, फिर हम
फाइंड करके उस जो HCF फाइंड होगा उस HCF को थर्ड नंबर के साथ लेकर फिर हम उस मेथड को कंटिन्यू करेंगे। तो हम 3 नंबर्स के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, 4 नंबर के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हम फाइंड कर रहे हैं ओनली फॉर 2 नंबर्स के लिए। ओके, नाउ थैंक यू।